openness kind of culture. हाँ ठीक है, recording मैं We're फिर gonna से बोलूँ क्या? we're gonna edit this part. Tell me. हाँ so apart from that, I think overall it has been kind of interesting. What's more can be done, I think, is we can think of uh, kind of uh, Mm-hmm. having sessions a bit more power packed in nature, Mm-hmm. right? Mm-hmm. Maybe if we could kind of, so in general product management में जैसे experience time के साथ नहीं होता, right? So Mm-hmm. similarly for students as well, to understand that thing, that it's not the number of hours that is important. It's Mm-hmm. important the content that is covered in those hours, that is more Exactly. important. Exactly. Huh, So we will be working on it, and still we are yeah, working on it, right? Uh Definitely, Nivedha, thanks for the feedback. Thanks for the feedback, guys. If you have anything in your mind, just let us know. Uh by the way, we are going for some raising some small funds from some big investors. So let's see what how the thing's gonna work. But ultimately, if you need any kind of a help, or maybe if you feel anything, just reach out to me, and just share your problem statement, right? Perfect, guys. So on that note, I'm handing over the session to Mr. Nivide, and sir, आपके आपको co-host बना दिया है, and you have all the access, and yeah, perfect, right? Cool. I'm also giving you screen share access and everything, and you can just go forward. yeah, Cool. sure. So, guys, today's session uh, is about software engineering process for product management. So, अभी तक यार हम focus कर रहे थे why पे, right? जो भी हम करते थे, right? We were focusing on why to build something, why we should go about solving a particular problem, what problem we should solve, right? Now, this session is a bit different. It covers how essentially you can go about building products that you have envisioned. So इसके पहले आपने जो research है और जो validation है, वो expected है कि वो आप उस time तक कर चुके होगे. Now it's time for execution, and essentially then project management, which is something which is also very important part of product management. So we'll cover the tool in play would be Jira. And before starting hands-on with Jira, uh, I'll just cover software engineering process a bit, what is meant by agile, right? And essentially from there on, we'll kind of take things forward. Sounds cool? Yes, Navidya. Yes. Yeah. So yeah, so if we look at the product development process steps, right? So essentially, it is essentially broken down into seven discrete pieces, right? So one is conceiving. So conceiving, कोई मुझे बता सकता है what is meant by conceiving? Thinking about the Initiation. idea, right? Initiation. Yeah, initiation, right? So conceiving is initiation, right? And then you essentially go about planning. Uh, so how do you go about planning? You do some user research, right? Right? You do some market research, right? And then you go into development phase, right? Here in development phase, essentially, here you kind of go about building a MVP, and then you iterate and get feedback. Here you use different product analytics techniques, right, to essentially iterate the product, and then you go about launching and figure out your go to market strategy, and then you maintain a steady state where your product is there in market and it's doing the stuff, and then you either go about maintaining or killing the product. इस process में किसी को कोई doubt है? I mean, this is how the normal process works, right? So here our focus is essentially for develop how we go about developing the product.
So essentially पहले एक बार पूछ लेता हूँ इसमें, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो if they can ask, or I should I proceed ahead? Yes, proceed. Yeah. So so one of the methodologies, right, which kind of came into picture essentially is called lean product development. So lean thinking, how many of you have read this book, The Lean Startup, by the way? Read the summary only, like. Okay. So the lean startup, essentially from there on, essentially lean product methodology came in, which talks about cutting all the unnecessary work and effort and only focusing on things that are really important to be done, or in other ways, creating a minimum viable product. Right. So the entire lean methodology is all about focusing on building a lean uh, lean product out there, which essentially which essentially takes in the bare minimum and tries to validate our problem statement. So guys, so the lean product development methodology involves something called as agile. थोड़ा सा theoretical रहेगा, इसके बाद हम जब जीरा पे आएंगे, right? But giving you an overview is important because एक बार आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड पता होगा तो आपको it becomes much easier for you to communicate with your engineers as well. So thoda sa bear with me for 2 or 3 more slides and then we'll move to that actual doing stuff on actual Jira, right? So essentially from there on, something called as agile evolved. So agile focused on few things. So पहले किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पहले पता है, पहले सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता था और अभी कैसे डेवलप होता है? Yes, earlier it was Waterfall waterfall method. Now it has come to agile. और waterfall में क्या होता था? It's static, like you can't change the requirements and you just give the end product to the client. So you can't make any amendments, and in case another requirement comes, so you can't change it in between basically. And with agile, it's like you have daily stand-up meetings and all, and there are sprints, and you basically go step by step, and it is continuously reviewed by the client. Yeah, exactly. So waterfall जो है वो बहुत ही लीनियर प्रोसेस था, राइट? जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आती थी और फिर उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट्स के बाद इम्प्लीमेंटेशन होता था, टेस्टिंग होती थी, डिप्लॉयमेंट होता था, मेंटेनेंस होता था, राइट? So most of the earlier softwares were made using agile methodology, जहाँ पे एक बार रिक्वायरमेंट अगर फाइनलाइज होगी तो फिर उसमें कोई स्कोप नहीं होता था फ्यूचर एनहांसमेंट का. Whereas agile came up with something, as she was telling, I think Sakshi was the person who was speaking, right? Yes, Navidya. Yeah. So Sakshi was telling कि essentially यहाँ पे loop form में होता है agile में. So whereas waterfall में आप जो है एकदम लीनियर मेथड फॉलो करते हो, एजाइल में आप पहले क्या करते हो, प्लान करते हो प्रोडक्ट को, उसके बाद डिजाइन करते हो, टेस्ट करते हो, डिप्लॉय करते हो, फिर फीडबैक लेते हो, फिर प्लान करते हो, फिर डिजाइन करते हो, फिर टेस्ट करते हो. रिमेंबर हमने जब प्रोडक्ट एनालिटिक्स की एक्सरसाइज करी थी तो हमने यही करा था, राइट? हमने डिजाइन करा हुआ था प्रोडक्ट, राइट? हम उसका मिक्स पैनल पे देखते थे, फिर मिक्स पैनल पे हम उसका फीडबैक लेते थे और फिर उस फीडबैक को हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम उसको प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल हमने वो डिस्कस किया था कि कैसे जब फनल ड्रॉप ऑफ होता है, राइट रोटसी? आपने भी किया था, राइट? हाँ राइट, या सो एसेंशियली हम उसमें जो है हम आइटरेट करते हैं, तो दिस इज एजाइल वे ऑफ थिंकिंग.
where essentially you kind of iterate the entire process. So here it involves continuous learning and development. Basically sprints conduct होती है. तो sprint कुछ नहीं होता है, आप जो अपने सारे टास्क होते हैं उनको 2 weeks में स्प्लिट कर देते हो और 2 weeks का एक स्प्रिंट होता है और उस 2 week में यू डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट and review something and then launch a product. Then you conduct another sprint, then you conduct another sprint, and then you move forward, right? There's also a book, right, guys? ये वाले में I will be sharing some of the material with you as well, right, which I would want you to kind of go through as well. So there's a book called Sprint. This is one of the excellent books which you should kind of read. इसकी website भी है, the Sprint book. It talks about how you kind of use a sprint to solve a big problem in 5 days. So from there, this kind of concept came in, and here it talks about the design sprint. Essentially, sprint की plan जो है, इसमें sprint का पूरा plan होता है कि पहले डे आप क्या करोगे, second day आप क्या करोगे, right? And essentially, how do you build a prototype? Remember हमने ये discuss किया था, right? कि how do we essentially go about testing things, right? If you guys have been through the session, right, where essentially we talked about wireframing as well, right? We essentially choose the target audience and then we sketch a solution and then we decide on what is the best solution by looking at the sketch, and then we build a prototype and then we test with the customers, right? So this is the normal sprint process that is followed, right? And sprint essentially continuously एक sprint का feedback वो second sprint में होता है and second sprint का feedback फिर third sprint पे आता है. Now essentially जो sprint में होते हैं task, right? They are essentially sprint में जो task include किए जाते हैं, that's called as product roadmap. And product roadmap जो है वो 4 parts में होता है. So first is theme. तो theme जो है वो basically highest level strategic objectives होते हैं. उसके अंदर epic बनाते हो आप, epic के अंदर stories बनाते हो. तो for example, take the book महाभारत, right? So महाभारत एक epic है, right? महाभारत के अंदर फिर बहुत सारी stories हैं, right? So essentially जैसे और एक product कुछ नहीं होता है, एक product is nothing but a lot of stories that are stitched together, right? So stories being stitched together are epic, and stories are nothing but specific tasks that have to be done. So उसी तरीके से Jira tool में भी we kind of create a roadmap wherein in every theme we create an epic, and in every epic we create a lot of stories. We'll take up an example which will kind of clarify to you guys as well. Now the basics of it still remains the same, right? That essentially what we do is कि पहले सबसे पहले vision पे we focus on. From vision we come up with the roadmap जहाँ पे हम epics and stories बनाते हैं. उसके बाद हम product को release करते हैं, उसके बाद iterate करते हैं और हम daily stand up करते हैं जिसमें हम discuss करते हैं basically 3 things. That is what task we are doing today, what task we did yesterday, and what roadblocks if we are seeing any roadblocks. And essentially essentially इधर पे right, so agile पे there are 2 ways it is followed. One is called timeline roadmap versus Kanban. ये सिर्फ so Kanban basically जो होता है, is anybody aware of Kanban by the way पहले से?
Yes. So क्या होता है Kanban में? It's like each to-do list thing where you have specific task. There's like to be done tasks, you know. Yeah. It's a kind of dashboard which has all the activities which are due or upcoming. So The task Kanban, tickets. Like planned, doing, done, like that. yeah, exactly. So Kanban के लिए हम जो tool use करते हैं वो होता है Trello. वो भी मैं आप लोगों को अभी एक example दूंगा. So now, so basically, we'll move on straight to Jira, right? Understanding how we would essentially create the entire sprint, right? It's one of the practical skills that product manager needs to do. बहुत simple होता है. Jira is by de facto the simplest tool to be used, right? It's used by engineering team and design team and product team, right? But I want everyone to kind of is anybody aware of जीरा हिस्ट्री? जीरा कहाँ से आया? मतलब ये वो वाला जीरा नहीं है जो हम खाते हैं. So Jira is a product by Atlassian. Atlassian is one of the Australia's biggest software company, and they are one of the pioneers in product management. एक बार आप लोग लॉग इन करोगे या कोई स्क्रीन शेयर करेगा? I want you guys to do it hands on. Let me stop screen share. I want somebody. अक्षदा आप So- शेयर करोगे या कौन बोल रहा था? नैवेद्य, yes I can share, but मेरा ऑफिस लैपटॉप है तो मेरा लॉगिन अच्छा, पर्सनल आई डोंट थिंक चल पाएगा. I can तो check. साक्षी आप शेयर कर सकते हो? Yes, I can try. 1 second. So it's basically 1 second. This link, right? या आप आईएएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये पहले का है. कुछ और लिंक I was searching, so and this Rashtrapati Bhavan, so that museum was open and I just wanted to go outside, so I just planned and was searching for things there. ओके, सो या नेक्स्ट कर दीजिए आप. Okay. सो जीरा, बाय द वे गाइस, आप लोग भी करते जाओ, राइट? आई मीन एक बार सब लोग ही लॉग इन कर लो. Continue with Google. या This is not cool. फिर विंडोज में इतने टैब्स खुल जाते हैं. हाँ. नैवेद्य विंडोज को इतना underestimate मत करो यार. हाँ विंडोज को इतना underestimate मत करो. यार, मेरे को तो भाई मतलब विंडोज से डर ही लगने लगा है, मतलब 3-4 साल से.
बस क्रोम ही है जो रैम लेता है, बाकी लेते हैं। अच्छा चलो बढ़िया है भाई। मैं तो ऑफिस में भी रो रो के मांगता हूँ यार, विंडोज मत देना, वो गिर जाएगा वापस। Because of the updates. हाँ यहाँ पे आप कर दीजिए, साइट का नाम डाल दीजिए कुछ भी, अपर्णा 1234 Okay, just put. साक्षी। यार मैक ओवरऑल पता है बेटर होता है, मतलब अगर लैपटॉप आपको कभी खरीदने का मन करे ना तो मैक जो है 7-8 साल चल जाता है। Okay. Actually, I chose Windows over Mac. Like usually people say that problem hoti hai because of the softwares and all. So it's better to go with Windows only. आप कर लो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लो। हाँ मतलब होती तो आप डाल दो प्रोडक्ट मैनेजर। सो बेसिकली यार मैक ओवरऑल जो है एक तो 7-8 इयर्स चल जाता है, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। मतलब नॉर्मल लैपटॉप 3 से 4 साल चलता है, ये ऑलमोस्ट उससे डबल चल जाता है। स्किप कर देना इसको। और दूसरी चीज बस ये है कि इसमें वो लेना पड़ता है कंटिन्यू। थोड़ा सा आई एम कर दो You कर दो न्यू, तो एक्सपीरियंस पे कर दो। हाँ फीचर्स टाइट, वो वरना वो बहुत ज्यादा वो करने लगता है, राइट। सो इस तरीके से बोर्ड आ जाता है, राइट गाइस, कैनबन, क्रम एंड बग ट्रैकिंग का। सो एसेंशियली जब हम न्यू फीचर पे काम कर रहे होते हैं, राइट, सो अगर आप स्क्रम पे क्लिक करोगे, राइट, सो स्क्रम इज द मेथड दैट इज जनरली प्रेफर्ड बाय मोस्ट टीम्स, राइट, वेयर स्प्रिंट्स आर कंडक्टेड। सो स्क्रम आप सिलेक्ट करो, यूज टेम्पलेट करो। टीम मैनेज, सिलेक्ट अ टीम मैनेज प्रोजेक्ट करता हूँ। शुरू में सेटअप करना थोड़ा सा जीरा में कंबरसम होता है। यहाँ पे लिख देना जो हमने वो वाला एक्सरसाइज करी थी ना, व्हाट्सएप, लिख दो आप व्हाट्सएप इवेंट्स। आप थे ना वो वाले सेशन में जब हमने व्हाट्सएप इवेंट्स। no, actually I was not there. Like I know the assignment, I have done it, but I have not shared it with you yet, as I was not well for in that session. So I'm हाँ yet. पर आपको पता है ना सेशन का वो वाला था, तो Yes, ठीक I है। know. उसी का अपन टास्क क्रिएट करेंगे, उसी को हम क्रिएट करेंगे। सपोज हमने वहां तक कर दिया, अब डेवलप कराना है, ठीक है। Okay. तो ये क्रिएट कर दो प्रोजेक्ट। प्रीतम ये होता है यार, जैसा आपको लग रहा है ना बिल्कुल वैसे ही होता है, मतलब पेनफुल होता है। सो Kanban seems a little bit, rewarding. हाँ Like ये when टाइम, you move it to done, you feel so good. हाँ यहाँ पे भी होता है वैसे, डन कर सकते हो आप टास्क। सो अभी हम एक क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे आप जाना। तो ये देखो व्हाट्सएप इवेंट जो है वो आपने एक वो क्रिएट कर लिया है, राइट। अब यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर ऊपर देखो एकदम create। सामने देखो। हाँ सो अब देखो व्हाट्सएप इवेंट्स करके जो है वो आपने एक इशू टाइप पे क्लिक करो। अब एक एपिक बनाओगे आप। सबसे पहले आप एक एपिक बनाओगे और इस पे समरी आप डालोगे
सो रिमेम्बर हम व्हाट्सएप पे क्या व्हाट्सएप कैलेंडर फीचर बना रहे थे, राइट? Yes. WhatsApp event scheduling, right? So event scheduling should be one of the epics, right? So epic आप समझ रहे हो ना, इसके अंदर टास्क होंगे। अब इवेंट शेड्यूलिंग से रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे वो इस एपिक के अंदर होंगे। इसको आप क्रिएट कर दो, नीचे स्क्रॉल करना और देखो इसका डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। अगर किसी को असाइन करना है तो असाइन कर सकते हो, कुछ भी डाल दें आप, ऐसे ही टाइप कर दो, कुछ भी जिब्रिश टाइप कर दो। And assign is automatic. Create. हाँ, नीचे आप देख लो तो देखो इसमें स्टार्ट डेट, ड्यू डेट, सारी चीजें दी होती है। सो रिपोर्टर इज द पर्सन हु हैज रिपोर्टेड। सो टिपिकली प्रोडक्ट मैनेजर इज द रिपोर्टर एंड असाइनी जिस इंजीनियर को आप असाइन कर रहे हो। तो आप ये क्रिएट कर दो। हाँ, अब देखो आप व्हाट्सएप इवेंट्स के अंदर आपने एपिक एक क्रिएट कर दिया है, राइट? सो अब आप प्रोजेक्ट्स पे जाओ, ये सॉरी बैकलॉग पे जाओ। एक सेकेंड यार, ये राइट वाला पहले तो क्लोज कर दो यार, ये डिसमिस क्विक स्टार्ट। हाँ ठीक है, वो बहुत ज्यादा वो हो रहा था। हाँ, इसमें एपिक चूज करो। हाँ, तो अब इस एपिक के अंदर आप इश्यूज क्रिएट करोगे बेसिकली। इस एपिक के अंदर आप जो है एक एक करके टास्क क्रिएट करोगे। अब आप अपना वो खोल लो, तो टास्क एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे टास्क क्रिएट करते हैं। सो वो खोल लो, आपने जो असाइनमेंट किया था, या कोई और शेयर करेगा? आपने वो तो बनाया होगा ना? मैंने बनाया है but it's not on this laptop, so I'll have to take. अच्छा चलो, तो अभी अपन रिकॉल करते हैं, राइट? हमने वो किया था कि सबसे पहले यूजर को एक कैलेंडर आइकॉन होगा, राइट? ठीक है, सेटिंग्स के पास जो क्लिक करना होगा, राइट? तो Yes. तो आप यहाँ पे लिखो एज ए यूजर आई शुड बी एबल टू see the events icon, and on click it should take me to event setup page. Naivedya, I have a question. Mm-hmm. I always wonder why, this kind of, I find it, active voice, or, maybe this looks passive also. Why do we say as a user, I should be able to do this, do that, or, why not it is like, the user should be able to do this? Why doesn't, any backlog item sound like that? यार Or ये हेलो वर्ल्ड टाइप का क्वेश्चन है। मतलब सो हेलो वर्ल्ड आपको पता है ना, मतलब प्रोग्रामिंग में हम हमेशा हेलो वर्ल्ड टाइप करते हैं, राइट? So it's like that, right? As a user, it's defined in such a way. I mean, it has been defined in such a way that user story should be written like that. And I also don't know the exact reason behind it. You can start with your story with that, but generally engineers are most used to this. Okay, sometimes when I was when I have a chat with somebody on this, or when I was instructed to do to write a user story or something,
and I started writing, okay, the app should enable the user to do this. Then, I'm corrected to not write it, but the other way, like as a user, I should be able to do this through the app. So it was like, it sounded like a grammatical correction in the first place. हाँ मतलब अब यार वो जनरली डेवलपर्स यूज टू हो गए हैं, राइट. आई मीन एज प्रीतम इज सेइंग कि दिस इज अ ट्रेडिशन, राइट, जो हम प्रोडक्ट कम्युनिटी में यूज करते हैं, राइट. सो आई मीन दिस इज अ सिमिलर फैशन, राइट, कि हम या राइट करते हैं कि एज ए यूजर. इससे ये भी समझ आ जाता है कि किसी प्रोडक्ट मैनेजर ने लिखा है डेवलपर को, तो मतलब तो वो गाली देने के लिए उसके लिए इजी हो जाता है. ठीक है. तो हाँ, अब आप इसको एंटर करना. ठीक है. अब ये ऐसे कर करके आप सारे टास्क क्रिएट करते आते हो, राइट. एक दो Yes. टास्क आप और क्रिएट करो, इसके बाद क्या होगा इवेंट पेज के बाद, इफ यू कुड रिकॉल दी स्टोरी. कोई और गाइड करेगा व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टोरी स्टेप एज अ यूजर? फिर से हमेशा एज अ यूजर ही आपको लिखना है. See the events icon, calendar page. I should be able to select the date, time, and menu of event. Naivedya, I had a question. Does the product manager go and explain like all these to-do things, or just the engineering manager or developer sees it and just goes on नहीं with नहीं it? नहीं नहीं, एक मीटिंग होती है हमेशा, जिसको स्प्रिंट मीटिंग कहते हैं. स्प्रिंट Right. उसमें स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग कहते हैं. उसमें बेसिकली सारे टास्क ग्रूम किए जाते हैं. बेसिकली सारे टास्क प्रोडक्ट मैनेजर समझाता है कि इसका मतलब क्या है. Okay, thanks. नैवेद्य, ग्रूमिंग सिर्फ एक ही बार होता है ना, कि लाइक सो या डेली स्टैंड अप्स, लाइक हाँ इफ अ हाँ स्प्रिंट हैज टू बी स्टार्टिंग, तो उसके फर्स्ट मीटिंग में सिर्फ ग्रूमिंग रहेगा, राइट? नेक्स्ट 5 days इट वुड बी ओनली स्टैंड अप्स टू गेट द अपडेट्स. हाँ. नेक्स्ट मतलब 2 वीक की होती है स्प्रिंट. हाँ. फिर उसमें सिर्फ स्टैंड अप्स होते हैं. अलग अलग कंपनीज में अलग अलग होता है. जैसे IND में हम पॉड्स फॉलो करते थे, वेयर अ प्रोडक्ट मैनेजर वुड डेवलप विद वुड वर्क विद डेवलपर एंड डिजाइनर एंड एवरीवन, राइट. इधर पे ऐसा होता है पेटीएम में कि प्रोडक्ट मैनेजर्स की मीटिंग होती है. प्रोडक्ट मैनेजर्स अपना मंथली मंथली टास्क बना के डाल देते हैं, और उसको फिर उसके बाद इंजीनियर्स जो है वो बेसिकली फिर एग्जीक्यूट करते हैं. इंजीनियर्स की अलग स्क्रम होती है, हमारी अलग स्क्रम होती है. अच्छा. हाँ ठीक है. आप ऐसे वो आपने बना दिया, राइट. सो हाँ, अब इसको जब आप बना दोगे, राइट, इसके बाद क्या होगा, you kind of go about creating a sprint, right? So create sprint जो है उस हाँ, so आप create sprint करो. अब इसमें स्क्रॉल डाउन करो. इसमें आप ये सारे टास्क मूव कर दो. सो बेसिकली ये आपका डेवलपर एक एक करके आपसे डिस्कस करेगा और फिर मूव करेगा. Okay. So when I go to create sprint, one second. Okay, so I'll just okay, I'll do it like this, a drop down. हाँ. Oh, sorry. अब इंजीनियर इसमें 2 चीजें करेगा. इंजीनियरिंग मैनेजर वो बेसिकली सारी स्टोरीज को उसका जो असाइनी है वो उसको असाइन कर देगा कि किसको असाइन करना है. वो देखो जहाँ पे आप वो पर्सन की इमेज बनी हुई है ना, प्रोफाइल, राइट साइड
राइट में हर टास्क के Okay. राइट में, हाँ इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा इंडिविजुअल को, उसको क्लिक करो। तो ये बेसिकली अभी तो जैसे आप ही का नाम दिख रहा है राइट, पर सारे इंजीनियर जो भी इंजीनियर होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा राइट, Mm-hmm. जो भी वो टास्क करने वाला, और उसके बाद जो है स्टार्ट स्प्रिंट कर दी जाएगी। सर स्टार्ट स्प्रिंट पे आप क्लिक करना। ठीक है, तो इसकी स्टार्ट डेट एंड डेट सब डिफाइन होगी, और ये एक स्प्रिंट जो है स्टार्ट होते आएगी। हाँ इसको आप नीचे स्क्रॉल करना। Should I click start? यप यप। सो अब आप देख रहे हो इस तरीके से एक बोर्ड बन के आ जाएगा डेवलपर्स के पास, और ये आपको भी दिखाई देगा। तो जो जो टास्क होता जाएगा वो इन प्रोग्रेस में मूव कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद उसको डन मूव कर दिया जाएगा। सो जैसे आप एक मूव करो, राइट। सो ऐसे स्प्रिंट के एंड पे आइडियली होना ये चाहिए कि सारे टास्क डन पे मूव हो जाने चाहिए, पर ऐसा कभी होता नहीं है राइट। मीनवाइल प्रोडक्ट मैनेजर क्या करेगा, वो बैकलॉग पे, और तो प्रोडक्ट मैनेजर का काम है बैकलॉग पे चीजें डालते आना, और डेवलपर्स का काम है स्प्रिंट में जो सिलेक्ट हुआ है वो उसको आगे मूव करना। प्रोडक्ट मैनेजर बैकलॉग पे और टास्क जो है वो ऐड करते आएगा। तो आप बैकलॉग पे जाना, मतलब जब तक डेवलपर्स काम करते आएंगे राइट, वो आप देख रहे हो स्प्रिंट पे, आप बैकलॉग पे और टास्क क्रिएट करते आओगे which they will pick up in next sprint। अब समझ आ रहा है कैसे एग्जीक्यूशन होगा। एक तरीके से आप जो है वो आप पीछे पीछे अपने टास्क क्रिएट करते होगे और डेवलपर्स उसको स्प्रिंट में पिकअप करते आएंगे। Yes. एंड देन रोड मैप पे, इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का? बैकलॉग में और आइटम्स ऐड हो सकते हैं वंस द स्प्रिंट इज स्टार्टेड, कि वो हाँ, अगले इसमें जाएगा? नहीं बैकलॉग में ऐड हो जाएंगे, वो स्प्रिंट में ऐड कराने के लिए आपको इंजीनियर से पूछना पड़ेगा। अच्छा, तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम सोच सकते हैं वैसा। हाँ आप बैकलॉग में कुछ भी डालो, बैकलॉग में आप 100 चीजें डाल दो। ओके Hmm. हाँ, बट But वो स्प्रिंट में जाएगा कि नहीं वो कंफर्म करना पड़ेगा। ओके हाँ yes. वो And प्रायोरिटी। and usually we don't add any other user stories. Like once it's fixed, it's fixed. We add the thing to another sprint only. हाँ वो आप अनदर स्प्रिंट में ऐड करते हो, अगर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है तो आप सेम स्प्रिंट में भी ऐड, लेकिन वो आप डिस्कस करके डेवलपर से करते हो। सो जनरली ये बेसिकली सो जीरा में तो बेसिकली एक बार ये क्लियर हुआ कि जीरा कैसे यूज होता है, और फिर उसके बाद कंप्लीट स्प्रिंट कर दिया जाता है। प्रीतम यू कैन आस्क एवरीवन डायरेक्टली एज वेल राइट, वो क्वेश्चन आप डायरेक्ट मैसेज की जगह ना एवरीवन पे भी भेज दिया करो, तो आपके क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रहते हैं, वो सबके लिए यूजफुल हो जाते हैं। एंड सो काफी सारे कमेंट्स आए हुए हैं। सो टू डू लिस्ट, व्हाट इज एकेआई फ्लो? आई डोंट नो एकेआई फ्लो। Aki flow. आई हैव नेवर यूज्ड एकेआई फ्लो। Okay, it also like integrates with your Google Calendar, etc., and other software. So it's really new and very helpful. सी ज्यादातर टूल्स तो यूज होते हैं, जो जीरा जो है वो बाय डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, मतलब Right. आप जहां पे भी जाओगे 99% सबने जीरा ही ले रखा होगा। Yes. सो
जीरा का देखो, जीरा होता बहुत सिंपल है, इसमें होता इतना ही है, राइट। एक और टूल मैं दिखा रहा हूँ जो कि प्रोडक्ट मैनेजर्स इंटरनली यूज करते हैं। सो देखो, ये तो हो गया डेवलपर्स के लिए, राइट, बट आप एज अ प्रोडक्ट मैनेजर भी तो 4-5 चीजों पे काम कर रहे होगे, राइट। सो देर आर फ्यू टूल्स दैट आई यूज एज वेल विच आई वांट टू शेयर विथ यू। एक बार मेरे को शेयर स्क्रीन देंगे आप वापस? जीरा बाय द वे अभी तक तो क्लियर हो गया, राइट, जीरा कैसे यूज होता है। Yes. सो आई यूज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेलो। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली बैकलॉग में सब चीजें एंटर नहीं करता हूँ। मैं पहले ट्रेलो में लॉग इन कर लेता हूँ, ट्रेलो में सारी चीजें डालता हूँ और ट्रेलो से उठा उठा के फिर जीरा बोर्ड पे डाल देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। फोर फोर। सो टिपिकली प्रोडक्ट मैनेजर के पास और भी टास्क होते हैं जो कि बेसिकली कंप्लाइंस टीम, रिस्क टीम, इन सबको करना होता है, राइट। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार इंजीनियर्स का वो यूज़ करें, राइट। तो हम ये बेसिकली ट्रेलो यूज़ करते हैं, एंड आई यूज़ द कैनबन टेम्पलेट, जहाँ पे मैं टास्क जो है क्रिएट करते आता हूँ और उसको मूव करते रहता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे को अगर आज कोई टास्क करना है, राइट, तो मैं उसको यहाँ पे मूव कर दूंगा, यार आई हैव दिस थिंग टू डू। सो बेसिकली यहाँ पे सो आइटम 1, आइटम 2, राइट, जो मेरे को दिन में करना होगा, राइट, मैं उसको ऐसे टास्क लिस्ट बनाऊंगा और इसको ऐसे मूव करते आऊंगा जैसे जैसे मेरा जो जो आइटम कंप्लीट होते आएगा। सो दिस इज आई यूज इंटरनली फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। सो दिस इज वन ऑफ द अदर टूल्स दैट इज यूज्ड। काफी सिंपल है ट्रेलो भी, राइट। दिस इज जस्ट यूज्ड फॉर काइंड ऑफ पुटिंग अप योर टास्क। एक बार आप लोग ट्रेलो लॉग इन करोगे Yes. एंड गिव मी लाइक 2 minutes और समथिंग, आई विल बी बैक। एक बार आप लोग ट्रेलो लॉग इन करो, एक बार आप अपने टास्क क्रिएट करो।
Hello. Hey guys. Hello. Hi. Sorry about that. So yeah. So essentially, you guys have tried out Trello. Yep. Okay. So Trello is essentially another very simple tool, right? Which we use. There are some automation features as well, right? Which helps you to kind of, so for example, जैसे आप एक रूल बना सकते हो कि कोई भी टास्क अगर 3 दिन से ज्यादा पड़ा हुआ हो डूइंग लिस्ट में, तो वो मेरे को एक ईमेल शूट आउट कर देना, right? Those kind of automation tasks you can create here, right? And you can create an email summary report which you can directly send to your manager as well. So these are some of the very exciting things that you can do on Trello. So yeah, this is one of the other tools which I really prefer, right? Apart from Jira. Satish actually asked a question. How do you estimate the story in Trello? So Trello में पहली बात तो story नहीं होती, Trello में तो task होते हैं, right? So estimation, और जो estimation किया जाता है वो Jira में करा जाता है, and there's something called story points which is assigned by developers. नैवेद्य ये बोर्ड एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा? आई लॉग्ड इन टू ट्रेलो बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट. ये क्रिएट बोर्ड, यहाँ प्लस साइन है ना. ओके मेरा मतलब यूआई भी थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है एक्चुअली. अच्छा, आप एक बार शेयर करो स्क्रीन. ओके मेरी स्क्रीन दिख रही है. हाँ दिख रही है. ये ऐसे आ रहा है. डिड आई लॉग इन टू द करेक्ट ट्रेलो? हाँ हाँ हाँ, सही क्लिक किया. बोर्ड्स पे क्लिक करना. अच्छा यहाँ पे. ओके ओके नहीं नहीं, होम पे क्लिक कर दो आप. होम. हाँ, अब इसमें प्लस साइन पे क्लिक करो. क्रिएट बोर्ड. अच्छा ओके ओके. लिख दो आप योर बोर्ड. ये इन जनरल, मतलब आप इन जनरल भी यूज कर सकते हो. हाँ मतलब अपना डेली का काम करने के लिए भी इफ आई वांट टू प्लान समथिंग सो यहाँ पे भी वो हो सकता है ना बिकॉज. हाँ हाँ हाँ. सो मतलब मैं तो वैसे अपना ट्रेलो अपनी मतलब पर्सनल, एक और मेरी आईडी है उससे ही यूज कर लेता हूँ, तो मैं अपने पर्सनल काम भी डाल लेता हूँ. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे को डॉक्टर को विजिट करना है, राइट, ट्यूसडे को, तो मैं वो भी डाल देता हूँ. तो उससे क्या है, और मेरे मैनेजर को मैंने शेयर कर रखा है, तो उससे क्या है, उनको भी क्लैरिटी रहती है कि मान लो अगर मान लो आज मेरे को डेंटिस्ट के यहाँ जाना है, राइट, तो 2 घंटे ब्लॉक रहेगा, तो वो सुबह खोल के वो खुद भी देख सकते हैं और उन्हें भी पता रहेगा. So yeah, this is one of the things that is there. Uh, Okay. so yeah, Should I stop sharing? yeah, you can stop sharing. Guys, now forum is open to you guys to ask me questions, and based on that, I'll uncover things. Nevadia, what's the difference between Jira and Jira Confluence? अच्छा, कॉन्फ्लुएंस जो है वो बेसिकली एक और टूल होता है. कॉन्फ्लुएंस पे आप जो है पीआरडी अपना जो है ना, अभी देखो, अभी अपन ने यूजर स्टोरी की बात करी, पर अपन ने ये नहीं डिस्कस किया कि पीआरडी कहाँ डालेंगे, है ना. Okay. पीआरडी डालने के लिए कॉन्फ्लुएंस यूज करते हैं, और कॉन्फ्लुएंस पे आप बेसिकली पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट, जैसे वर्ड पे क्रिएट कर सकते हो ना, Hmm. वैसे ही कॉन्फ्लुएंस पे क्रिएट कर सकते हो आप.
Satish has been using Confluence and everything a lot, right? एक्चुअली में ये बहुत डेली यूज करने लगते हो ना आप टूल्स, तो मतलब जैसे मेरे से एक्चुअली में पता है ऋतिक ने रीच आउट किया था, बोला था कि ये वाला सेशन लेना है, तो मैंने बोला यार ये हमारे लिए इतना ज्यादा डे टू डे होता है कि इसमें क्या एक्सप्लेन क्या कर पाएंगे, बिकॉज ये एवरी डे यूज करोगे आप जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट रोल पे जाओगे ना. बट इट्स गुड टू नो बिफोर हैंड, बिकॉज आपसे अगर कभी इंटरव्यू में भी कोई पूछ लेता है, राइट, आप प्रोडक्ट रोल के लिए कर रहे हो, राइट, तो उसमें आप ये देखो, इसमें ऐसे पेज टाइटल है, राइट, तो आप इसमें पूरा फॉर, सो आप यहाँ लिख सकते हो PRD फॉर व्हाट्सएप इवेंट्स. Okay, so this is basically like creating SOP document के लिए use हो सकता है ये, right? हाँ, और Okay, इसका आप okay, जीरा got it. स्टोरी में वो डाल सकते हो, Link दे सकते हैं. हाँ. So I use basically Jira like in the like office का day to day work, but वहाँ पे बहुत like limited चीजें हैं, like creating tickets for task और you know हाँ, वो एडमिन creating सेटिंग्स में उन्होंने yeah, इनेबल डिसेबल कर हाँ रखा है. right, तो वो थोड़ा organizational level पे customized है, तो वो like still these things are new and different for me. हाँ, जीरा के अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे मेरे ऑफिस Right. में भी सिंपल होता है, और मतलब मैं कुछ और टूल्स आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल होंगे. देयर इज अ टूल कॉल्ड एयर टेबल एज वेल. एयर टेबल सुना है लोगों ने नाम? सिर्फ सुना है. Haven't used. Yeah. अच्छा, एयर टेबल बेसिकली जो है वो भी इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कि आपको मतलब वेबसाइट को अगर मान लो लिंक करना हो डेटा से, तो आराम से लिंक कर सकते हो. मैं एक बार साइन इन में गूगल कर देता हूँ. सो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ट्रैकर या प्रोडक्ट प्लानिंग का मैं यूज कर लूंगा, तो राइट इधर पे आप देख रहे हो कितने अच्छे से वो कर सकते हो टेबल में. आप अपने बैकलॉग वगैरह को रख सकते हो. हाँ, ये आप स्प्रिंट में डाल सकते हो, राइट, चीज़ों को इधर पे भी वैसे ही करना होता है जैसे वहां पे आपने उठा के डाला था ना, इसको भी वैसे ही कर सकते हो. मतलब अगर आपको ये इजी लगता है तो यू कैन यूज दिस, और यहाँ पे आप पॉइंट्स असाइन करते हो. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिमिलर टूल विच इज काइंड ऑफ यूज्ड, बट सबसे सिंपल सारे लोगों के लिए यूजफुल जो है वो जीरा और ट्रेलो है. सो जीरा और ट्रेलो में सबसे बढ़िया तरीके से आप जो है टास्क को अपने ट्रैक कर सकते हो. Yep. Right. So, Naivedya, I'd like to add to whatever you said. So, in my company, what PRDs, PMs, PRDs, FRDs, वगैरह लिखते, what we do is what we also mention on documentation, like developers भी अपना जो techniques, जो technology use किया, everything we document it here on the Confluence Jira, and even we as QAs also, we also write our document our test cases here, so that if any XYZ person from outside or from outside the technology team comes and opens the particular ticket, he can view everything on a single link, like from the PM end, from the dev end, from the QA end, from the BA and सब कुछ. So it's Yeah. used SAP. So I mean ये सारा जो है मतलब as you said, right, कॉन्फ्लुएंस वगैरह में API कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह डेवलपर्स पब्लिश करते हैं. सिमिलरली yes. QA टीम जो है वो अपने टेस्ट केसेस जो है और वैलिडेशंस जो उन्होंने लगाए हैं, राइट,
वो सारे डाल देते हैं, right? So Yeah. all those are kind of covered there. Yeah, and then link it to the ticket, Jira ticket. Then that Jira ticket would be accessible to all. Then they can use this link anytime, anywhere. ऐसा. Yeah. So basically मतलब क्या कहते हैं, काफी ज्यादा वर्सेटाइल हो जाता है टूल. मतलब दिस इज लाइक हार्ट एंड सोल ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, राइट? मतलब जीरा और कॉन्फ्लुएंस पे ही सब कुछ वो होता है. मेरे को प्रीतम ने एक क्वेश्चन बोला है, मायरो करके टूल है. प्रीतम, यू वांट टू ड्राइव थ्रू माइलो? No, I wanted to understand, like, from your perspective, you are experienced, right? मायरो मैंने नहीं यूज किया. No, just see around templates and, ओके ओके. is it just like good for looking out, or whether it would be practical? Sorry for the spamming. No worries, no worries. So, Satish was there. So, Satish, you was also saying, right? You are a CSM and CSPO, right? Guys, CSM is Certified Scrum Master, and CSPO is, sir, what it is? Certified Scrum and Product Owner. Yeah. Owner. So Satish is already, I mean, so I know Certified Scrum Masters because Scrum Masters are there, right? In every company. And essentially they drive a lot of things. And essentially, क्या कहते हैं, he might be very comfortable with using it. This is a website which is shared. मैं यार ये bookmark कर लूँ, ये already बहुत अच्छी लग रही है. I think you go to the use cases. Yeah, मैं एक बार sign up कर लूँ. Yeah, no worries. Okay. So this is similar to Whimsical, if I am not wrong, right? Yes, yes, yeah. And इसमें, okay, so it allows you to create flow chart. It also allows you to create mind map. It also helps you to create story maps, right? अरे काफी सही है यार. कस्टमर जर्नी मैप भी क्रिएट कर सकते हो आप. There's also daily stand-up, I guess. Go to the agile workflows in the use cases. Left me. What is that PI planning? Do you know anything about that? नहीं, ये सतीश है, उनको आइडिया होगा. मैं बहुत इस मामले में आई एम मोर ड्रिवन बाय whatever the scrum expert calls in. Right, I am more like feature wala PM who would come up with the tasks that are there and add Daily them back. stand-up, yeah, down there. Down, Okay. left, yeah. हाँ, ये अच्छा है यार. Oh, amazing. So यहाँ पे names के साथ आप वो कर सकते हो track, right? किसने क्या किया, कब किया, right? And all those tasks can be moved, right? Yeah, easy delegation, I guess. Oh, amazing, amazing. This is amazing, yaar. Guys, you can try it Delegating as well. people.
Yeah, just like post-its. So हम post-its actually में office में use करते थे team के लिए, right? But this is kind of good, right? I'll Thanks for the bookmark this. review. Thanks ये for the काफी- review. Yeah. Any other questions, guys, you have, right? Because I mean, I just had this to cover for you guys, right? I just wanted to cover Jira and also Confluence for you guys, right? I just wanted to kind of give you guys a brief introduction about how sprint planning is done, and essentially how tasks are created. You have already done a lot of things on how to do it. This is essentially why to do it. This is essentially how do you go about doing it. Any other questions you guys have? In general, any other questions आपके हो तो please ask. I had one question. अगर किसी के पास वायर फ्रेम्स के रिलेटेड अगर डॉक्यूमेंट या रिकॉर्डिंग हो तो कैन दे शेयर विद मी? वायरफ्रेम से रिलेटेड रिकॉर्डिंग तो आपको शेयर की होगी ना ऋतिक ने? मुझे somehow वो वाला एक ही नहीं मिल रहा, बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने चेक किए बट अच्छा, मैं एक बार ऋतिक से पूछ लेता हूँ. या एक श्योर, बार. ओके. थैंक यू. वायर फ्रेमिंग में बाय द वे आपको बन तो गया था, राइट? कैसे बनाते हैं, राइट? यस. ओके, ठीक है, मैं एक बार पूछ के बताता हूँ. बट आई रियली लर्न समथिंग न्यू एज वेल, राइट? मायरो, दिस इज अ गुड टूल यार. हाँ, पीआरडीज के लिए सो मैंने एक पीआरडी का लिंक बनाया था. पीआरडी के लिए केस स्टडी चाहिए आपको? एनीथिंग. सो पीआरडी के लिए ये रहा. No, Preetham. Excel is still very useful. बिकॉज एक्सेल में काफ़ी कुछ करना जो है वो बहुत फास्टर होता है. लाइक फॉर एग्जांपल लुकअप्स वगैरह लगाना, इट्स मच फास्टर एंड पाइवट टेबल्स बनाना. सो इट्स मच मोर एडवांस्ड देयर. So I was saying that it's not a complete replacement. So Google Sheets, Excel is still very widely used because of the ability to make pivot tables and everything. Pivot tables सबको पता है कैसे बनते हैं? मैं एक बार दिखा दे रहा. So for example, cars है, price है, color है. Tesla. That's it.
सो बेसिकली अगर आपके पास ऐसा डेटा है तो यू जस्ट सिलेक्ट ऑल द डेटा पॉइंट एंड देन यू क्लिक ऑन इंसर्ट एंड यू क्रिएट पाइवट टेबल। सो इस पे इसके बाद जो है आप इसे रोज और फिल्टर्स में लगा सकते हो, राइट? लाइक आई वांट टू सी कार और उनके प्राइसेस, तो आई कैन डू दैट। I want to kind of have in color, so I can have that. So you basically slice and dice कर सकते हो आप डेटा को। This feature is also available in Google spreadsheets, है ना? हाँ, गूगल स्प्रेडशीट पे अवेलेबल है, पर फास्टर होता है एक्सेल पे। मतलब आई प्रेफर यूजिंग एक्सेल। इफ यू kind of find Google Sheets faster, I mean most of the people find Excel faster, but it can be used interchangeably. मतलब now Google Sheets is catching up like anything. हाँ, शीट्स हैज प्रीतम सीक्वल का तो कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। सीक्वल फॉर सीक्वल, राइट? आई मीन सीक्वल इज रिलेटिवली वेरी सिंपल एज वेल टू लर्न। सो आई मीन that is something that doesn't require much effort. If you want, I can share a link for SQL as well, where you can learn SQL very fast. You guys want to learn SQL? ये काफी अच्छा स्कोर है। W3 schools भी अच्छा है। हाँ, W3 स्कूल्स भी सही है। मैंने एक कोर्स वैसे यूडेमी में किया था, मेरे को काफी सही लगा था ये। The complete skill bootcamp। हाँ, ये 400 रुपीज समथिंग का मिल जाएगा। You can also check data camps courses. They are actually hands-on. हाँ, डेटा कैंप के भी होते हैं। ये भी हैंड्स ऑन होता है काफी। सो बेसिकली मेन चीज जो प्रोडक्ट मैनेजर के लिए सीक्वल में काम की होती है वो सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी होती है। सिलेक्ट, ग्रुप बाय, अगर ये सब आता है आपको तो 90% ऑफ योर थिंग इज सॉर्टेड। The basics, right? The select, update, insert. हाँ, बहुत बेसिक्स चाहिए होते हैं। Okay, बाकी तो that I will. कॉम्प्लेक्स के लिए डेवलपर ऑलरेडी विल बी देयर, राइट? वो विल बी देयर टू असिस्ट यू। Then no problem. Yeah, I was afraid of that. Cool, guys. I think if there's anything else, right, you can ask me. Naivedya, actually, starting में when you were teaching Jira, तो I got disconnected for some time. So if I share my screen, तो आप मेरे को फिर से एक बार guide कर देंगे, please? हाँ, sure, sure. I'm presenting. एक मिनट। हाँ, आप शेयर करो। तो इसके बाद क्या करना होता है? तो इसके बाद जो है आप पहले व्हाट्सएप इवेंट्स आपने वो बना दिया, राइट? अब आप क्रिएट करो। सबसे पहले एक एपिक क्रिएट करते हैं। अच्छा। तो इशू टाइप में सिलेक्ट करो एपिक। और यहाँ पे आप डाल दो इवेंट्स, समरी भी डाल दो। कुछ भी लिख दो ना यहाँ पे। हाँ,
उसके बाद उसके हेलो बाद क्रिएट कर दीजिए, हाँ क्रिएट कर दीजिए। सो ये आपका इवेंट, ये आपका एक वो बन गया। अब आप बैक टू प्रोजेक्ट पे जाइए। हाँ अब आप जो है बैकलॉग पे जाइए। ये यहीं पे बैकलॉग लिखा होगा, बोर्ड्स है उसके नीचे। नहीं नहीं, बोर्ड्स के नीचे जहाँ पे वो डिवाइडर लगा हुआ है, उस डिवाइडर को नीचे स्क्रॉल करिए। अच्छा मुझे स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है। एक मिनट, आपके में क्यों नहीं आ रहा? बोर्ड, हाँ बोर्ड पे ही क्लिक करना है एक बार। हाँ बोर्ड पे क्रिएट कर दो आप व्हाट्सएप इवेंट्स करके। शायद वो प्रोजेक्ट के अंदर भी आ जाएगा, ऊपर प्रोजेक्ट के अच्छा अंदर हाँ भी। हाँ, क्रिएट स्क्रम बोर्ड, इन्होंने अभी स्क्रम बोर्ड नहीं बनाया। अच्छा ओके ओके क्रिएट स्क्रम बोर्ड फर्स्ट वाला है ना या फिर सेकंड वाला? ऑलरेडी क्रिएट विद न्यूज बोर्ड, क्रिएट विद ये न्यू वाले ही कर दीजिए, नेक्स्ट करिए। प्रोजेक्ट नेम डाल दीजिए व्हाट्सएप। हाँ क्रिएट बोर्ड। हाँ अब आ गया ना, अब बोर्ड बन गया है। अब आप बैकलॉग में डाल सकते हो अपनी, पहले एक आप एपिक क्रिएट कर लोगे। क्रिएट एक एपिक, अब एक एपिक क्रिएट कर लो। हाँ 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 An epic cannot have another epic linked to it. आपने ऑलरेडी कोई एपिक लिंक किया हुआ है क्या? नहीं इससे पहले जो मैंने क्रिएट किया था मे बी, तो इसका अच्छा ठीक। लिंक। आई थिंक वो बस ऐसे एक ये दे रहे हैं आपको। अच्छा यू कैन ट्राई क्लिकिंग ऑन क्रिएट। हाँ हो हाँ गया। हाँ अभी if I click on backlog will it show? हाँ अब आप जो है ये बेसिकली अब आप बैकलॉग पे क्रिएट इश्यूज क्रिएट करते होगे। ओके तो नीचे यही पे नहीं नहीं नीचे ओ, क्रिएट इशू। या हाँ हाँ इशू 1, हाँ कर दो इसको। इसको लिंक टू एपिक कर देना, वो राइट पे 3 डॉट्स बने हुए ना। यहाँ पे हाँ हाँ एपिक लिंक। हाँ क्रिएट हाँ इसके बाद जो है आपने ऐसे इश्यूज क्रिएट कर दिए, फिर उसके बाद आप एक स्प्रिंट क्रिएट कर सकते हो और स्प्रिंट में आप अपने इश्यूज को मूव कर सकते हो। ओके सो इफ आई क्लिक ऑन क्रिएट स्प्रिंट ओवर हियर तो ये आ जाएगा यहाँ पे एंड आई कैन प्लान। Yeah, you can move the events from backlog to here. ओके और एक्टिव स्प्रिंट में जो एक्टिव होंगी वो स्प्रिंट्स का डेटा देखेगा। ओके अभी नहीं देखेगा, अभी कोई एक्टिव नहीं है अभी ना तो स्प्रिंट। हम्म।
एक बार आप create कर लो, backlog पे जाओ. Hello. Hello. Yes. Naivedya, you are audible. I think she has some network problem. Okay. Cool. Chalo, ठीक है. I think most of the thing was covered here. Preetham actually asked one of the questions, right? Does an APM so APM essentially assists a product manager in doing most of the tasks, right? Yes, the similarities are, I mean, they have similar responsibilities, but product में ownership ज़्यादा बढ़ जाती है. Okay, thanks. Cool है, guys. Thank you. Nivedya, I just want to ask one thing. Like it's not related to all these things. Just the point, like Mac versus Windows. But because, like, is it really a problem when you start using Mac? Because I always get this review that you will find have a problem related to softwares and all whenever I try to go for Mac. यार ऐसा नहीं होता है. जनरली पेड सॉफ्टवेयर में विंडोज आपको पेड खरीदना पड़ता है, right? Hi, I'm so sorry I got disconnected. Yeah. So Bimla, you understood, right, the point, right, how to go about it, right? Yeah. Okay. So we were discussing the eternal debate that was going on कि Mac versus Windows. So essentially ऐसा नहीं है. Mac में आपको used to होने में 3-4 दिन लगते हैं बस. Most of the softwares are now everything is online, right? So वैसे भी हम software ज़्यादा use कहाँ करते हैं? सब Chrome के through ही तो करते हैं. Yes. Like आप gaming करते हो क्या? Games वगैरह नहीं करते? नहीं. No games, but in general, all the softwares, like, yeah, like even if it's related to my company work or some personal work, so there should not be any hindrance because like most of the people around me use Windows only. So that's why like हाँ, थोड़ा सा आपको पे करना होता है, as Preetham is saying कि you have to pay for services for, like for example for MS Office के लिए I have to pay, right, annually. But overall like usage काफी ज़्यादा smooth है. What about Apple products like within So the apart from ecosystem? MacBook, everything else is overpriced. iPad too? iPad also. I think that everything else is overpriced Okay. apart from Mac. But Mac for सस्ता पड़ता है. productivity, it's best, right? हाँ, for productivity it's best, right? I mean, you don't want your laptop to get stuck and everything, right? Which doesn't happen with Apple. So मतलब उस मामले में काफी अच्छा. और आप वैसे भी एक बार मैक लेके देखो, फिर आप लोगे ही नहीं विंडोज. okay. मतलब वो बिल्कुल ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है. It doesn't hang much, does it? No. it never hangs. So I haven't turned this laptop off for 2 years now. Sakshi, you can check YouTube reviews. You'll find way better reviews for Mac. Okay. Like I've seen reviews from all the programmers who use Mac, and like they say that even with the new chip and the 8 GB RAM variant is still sufficient enough, to do. So like if your usage is lesser than that, then obviously it would be buttery smooth for you. Okay. Thanks, Akshata. Yep. Yes. I mean, मेरे को तो यार ऐसा लगता है कि अगर आप 40,000 का लैपटॉप ले रहे हो और अगर वो 4 साल चल रहा है तो 80,000 का 8 ईयर चलने वाला सेम ही प्राइस का है. मतलब 8 साल in general MacBook will work smoothly for you for at least 5-6 years. Okay. Yeah, because I had a choice, like my earlier laptop was Dell. It was durable, like it
like I used it for 6 to 7 years and it was durable. But yeah, 2-3 years back, I was purchasing a laptop and I was confused between Mac and Lenovo and all, because I needed more GB and RAM and everything. So but then like I was liking Mac, but then I got this review, yeah, you will have problems with softwares and everything, because even like we were using this stats tools and all also. So I was not sure, like, should I go with it and or not? So Way yeah. I think काफी ज़्यादा useful है. In fact, you should go with the basic version of it. This is a 128 GB Mac, which I am having. This was the cheapest Mac that was available when in 2016. But ये काफी सही चल रहा है. So you can go with the cheapest version as well. Cheapest अभी मेरे ख्याल से MacBook is around 80,000 if I'm not mistaken. Yeah, it's 92,000 8 GB 256 variant. हाँ. जो डिस्काउंट होके आपको मिल जाएगा अराउंड. और अगर आप प्रीवियस मॉडल भी लेते हो तो वो भी काफी सही है. मतलब चल तो जाएगा, सारे ही चल जाएंगे. अभी तो देखो अवेलेबल तक नहीं है, मतलब हाथों हाथ निकल जाते हैं. ऑफिस वन आई हैव दिस वन मैकबुक प्रो, बट मैकबुक प्रो मेरे को उससे ज्यादा अच्छा एयर लगता है. हाँ, पर इसमें ये सब करना पड़ेगा आपको. वो यूएसबी लगाने के लिए सब चीज लेनी पड़ती है. एक्स्ट्रा एक्सेसरीज. मतलब थोड़े से इसमें चोचले हैं. Okay. यार प्रीतम, ये मैंने भी सुना है, राइट, एंड आई एम फीलिंग दिस, राइट. मेरा लैपटॉप कुछ टाइम से स्लो हो गया है. आई थिंक एप्पल डज दैट. इट स्लोज डाउन योर ओल्डर वर्जन्स. नहीं, वो नवेदिया इसलिए स्लो करता है ताकि आपकी बैटरी भी पुरानी हो रही है ना, तो वो लोड नहीं ले पाती है सिस्टम का, इसलिए वो स्लो करता है. यार पता नहीं, मेरी तो बैटरी खराब ही हो गई है. इसलिए इसलिए वो एप्पल ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था कि वो बैटरी पुरानी जाती है, इसलिए वो स्लो करता है सिस्टम को, ताकि वो लोड ले पाए बैटरी सिस्टम का. पता नहीं यार. That's just their version. हाँ, that's their version of truth. Yeah. Cool है guys. Yep. Yeah. Cool. Thank you. Thank you. Bye all. Bye, bye, bye. Thanks everyone. Bye bye.